let's move to the factors affecting the rate of enzyme activity. Now, if we talk about enzymes, we understood that enzymes are basically what? Enzymes are globular proteins, correct? And they can catalyze all the reactions, all the metabolic reactions of our body, right? So enzymes, why they were able to catalyze those reactions? Because they have something known as the active site. An active site is basically a hollow depression or a hollow region where the substrate can come and bind to the enzyme, and then the reaction can take place. Okay, so this active site is basically three-dimensional, and our enzymes are basically three-dimensional protein molecules, and our substrate molecules, they basically come and they bind to this active site. Now, the shape of this active site is specific. The shape is basically fixed for the enzyme's active site, and it's particular to what? To the substrate molecules in most of the cases. In most of the cases, according to the lock and key hypothesis, the enzyme's active site shape is complementary to your substrate molecule, so that the substrate molecule can perfectly fit into this active site. Now, this shape of this active site is because of what? It's because of the bonds. And what bonds am I talking about? We're talking about the bonds that are formed during the tertiary structure or the third level of protein folding, which are your hydrogen bonds, your hydrophobic interactions, your ionic bonds, and your disulfide bond. So these are the four bonds that are formed when? That are formed at the third level of protein folding. And this basically gives enzymes, or any protein for that matter, a 3D structure. And this 3D structure is what is giving an active site its shape, right? So basically, these four bonds over here are responsible or are holding the active site in its shape, in its place, okay? Now, how can certain factors or certain changes affect these bonds or affect the shape of the active site or cause it to denature or cause the rate of enzyme activity to deteriorate? Now, let's talk about temperature. Before we talk about the factors affecting the rate of enzyme activity, let's recall that enzymes are what? Enzymes are globular proteins. This is something that we studied in our second chapter, which was biological molecules. So we studied that enzymes are what? Enzymes are your globular proteins, right? And globular proteins are sensitive, or they're easily affected by what? By changes in temperature and pH. Now, let's understand how temperature, increasing the temperature or decreasing the temperature, can affect our enzyme activity. Okay, so let's look at this graph. This is basically a graph plotted between the rate of reaction, how our enzymes are catalyzing the reaction and how that reaction is proceeding, and temperature. Now, temperature is what? This is your independent variable. Always remember that on the x-axis, your independent variable is plotted, and on the y-axis, your dependent variable is plotted. So what this means is that if you change the temperature, right, the temperature change would affect your rate of reaction. यानी temperature कम या ज़्यादा करने से मेरा जो rate of reaction है उस पर affect पड़ेगा. So my rate of reaction is dependent on what? It is dependent on the change in temperature. However, if we talk about rate of reaction, एक experiment हो रहा है, एक catalysis हो रहा है, एक reaction take place कर रहा है,
उस रिएक्शन के टेक प्लेस करने से मेरे टेम्परेचर पे शायद इतना कोई फर्क ना पड़े. My temperature would be independent to whatever the rate of reaction is. But the change in my temperature would definitely have an effect on what in my rate of reaction. So this is what dependent and independent variables are and how they are correlated. Now, if you look at this graph, before I describe it or I explain it, how would you, explain what you can figure out or what you can decide for looking at this graph? What is your understanding of this graph? Either Huda or Hajra, anybody of you could answer my question. What can you say about this graph? Okay, so you can say that yes, after a specific high temperature, the rate of reaction slows down. So if in complete picture, if you talk about the complete picture, we can say that initially at lower temperatures, the rate of reaction is less. It's not as high. And at one particular temperature, at a specific temperature, which we call the optimum temperature, the rate of reaction is at its maximum. And after this point, it becomes to slow down. This is what you can say looking at the graph. Now, what happens is that there are two types of questions that come in your exam related to the graphs of factors affecting the rate of enzyme activity. And we would be going through the subtopic with respect to how it's asked in the exam paper. So now, एक हमारे पास word होता है, एक हमारे पास जो question की command होती है, because when you're attempting your paper, the questions command is very important, which you have to pay a good attention to and then answer your question respectively and according to it. So one question is, describe the graph. उसमें जो हमारे पास command होगी, that command would basically be of describing. And the other would be explain the graph. Now this question would come as a 2-marker question for 2 marks, okay? And this could come for either 3 or 4 marks. And these are 2 different questions. कभी कभार ये 7 आ जाते हैं and usually ये 7 आ जाते हैं. First part says that there is a graph given to you, ठीक है, and in the first question or the first part, they would say to describe the graph or describe this curve or tell us what is happening, something on those lines. वो description मांग रहा होगा आपसे. And in the second, it would be asking for explanation. Now the markers or the mark scheme are totally different for both the questions. And the graph is same. Now, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब का मतलब ये होता है कि आपको जो नजर आ रहा है, आपको जो एक पिक्चर दी हुई है, उस पिक्चर में जो आपको नजर आ रहा है, आपने सिर्फ वो एक्सप्लेन करना है. यू हैव टू आंसर इट एज इफ यू आर लुकिंग एट दिस ग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वॉट एवर यू कैन सी, you write over here. And in the explanation part, you tell that why is this happening. Describe is your what and explain is your how or why. Okay? You do not give reasons over here. You only tell what you see. And over here, you give reasons or explanation. And for all the graphs that we would be doing today, we would be answering respectively. So let's give the color. For description, I would be writing the description wale pointers with a, let's choose a color, just give me a second, with a blue color. And for our explanation, we'll be doing that with another color. So over here, what you can see, initially you would say that, let's say this is your description. What is your description? The description is that as the temperature increases, the rate of reaction increases till the optimum temperature. You can either say till the optimum temperature or you can say till Vmax.
Why Vmax? Because what is Vmax? Vmax is basically the maximum velocity or the maximum rate of your reaction. The max velocity or the max रेट ऑफ रिएक्शन. तो हमारे पास जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, है जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन की, दैट इज योर Vmax. और हमेशा ऑप्टिमम कंडीशंस में हमारे पास जो Vmax होगा वो अचीव हो रहा होगा. So in the description you would say that as the temperature increases the rate of reaction increases until you reach the optimum temperature or until you reach the Vmax. Now आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग, हमने ये वाला पार्ट, हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं कि हम इस ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक हमारा पार्ट वन ये हो जाएगा और ये हमारा पार्ट टू हो जाएगा. यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दिया दैट एज वी आर इंक्रीज, सॉरी एक्सप्लेन नहीं किया, डिस्क्राइब कर दिया दैट एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर our rate of reaction or our enzyme activity is increasing till the optimum temperature or the Vmax is achieved. Now, at the second part, what we can see in the second half of the graph? In the second half of the graph, we are observing that the rate of reaction, or you can say that the enzyme activity decreases when you increase the temperature beyond or above the optimum temperature. So this is basically what you can see. यानी अगर आपने एंजाइम का चैप्टर नहीं पढ़ा, आप एक साइंस स्टूडेंट नहीं हो, फिर भी ये वो चीजें हैं जो आप सिर्फ देख सकते हो और डिस्क्राइब कर सकते हो. आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो ग्राफ है उसमें इनिशियली हम एक इंक्रीज इन द रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड वंस द ग्राफ हैज रीच्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट, that graph then starts to decline. The reaction starts to decrease once you increase the temperature beyond this point. ये ऐसी चीज है जो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो. आपने इस पूरे क्वेश्चन में जब आप इसको आंसर कर रहे थे, आपने किसी भी पॉइंट पे ये नहीं बताया कि why the increase in temperature is causing an increase in the rate of reaction, and you have not explained why the rate of reaction decreases after this point. You're not explaining anything, you're not giving any reasons, you're just telling what you can see, what you can observe. So this is your description wala question. जब भी वो आपसे पूछेगा describe this curve or describe this graph, you would only tell what you can see and nothing more. You do not have to explain, you do not have to give any reasons when you're attempting that part. Now, in the second part, when it is asking you to explain, now you have to give the explanation. नाउ अगेन एक्सप्लेनेशन के लिए भी हम अपने इस ग्राफ को दो पार्ट्स में, जैसे हमने पहले डिस्क्रिप्शन में डिवाइड किया था, उसी तरह से एक्सप्लेनेशन भी हम लोग इसी तरह से करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में जो चीज हो रही है, जो चीज हमने ऑब्जर्व की, उसकी रीजनिंग क्या थी. हम पहले वो फर्स्ट रीजन एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम अपना सेकेंड रीजन या सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे कि ये वाली चीज हम क्यों ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो आई वॉन्ट यू टू आंसर दैट. एक सेकेंड, हमने डिस्क्राइब कर दिया अपने ग्राफ को, अब हमें इन दोनों डिस्क्रिप्शंस की क्या देनी है, हमें एक्सप्लेनेशन देनी है. So either one of you, can you tell me that what is the reason why is there an increase in the rate of reaction as the temperature increases? What is the factor or what is the reasoning why हमारे पास एंजाइम के जो कैटालिसिस है, जो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्यों इंक्रीज करे टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से? Very good. So the kinetic energy of the particles is increasing. Now, अब हम खाली ये तो नहीं लिख सकते. Okay, so what are you saying? So more collisions are there. Okay, so first you understood. Let's start writing this. So you would say as temperature increases, the kinetic energy increases, thereby
increasing the frequency of effective collisions. अच्छा, अब अगर हमारे पास collision ज्यादा हो रही है, what do we mean by collisions over here? कि हमारे पास जो enzyme के molecules हैं और जो हमारे पास substrate के molecules हैं, वो ज्यादा frequently एक साथ collide कर रहे हैं. हमारे पास पहले भी वही enzyme, वही substrate present था हमारे environment में जो अब collide कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि magically collisions हो रही हैं, magically enzyme आ गया, magically substrate आ गया. हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों प्रेजेंट है, राइट? हमारे पास सबस्ट्रेट भी कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होगा, एंजाइम हमें पता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, व्हाई? बिकॉज इट्स अ ग्लोबुलर प्रोटीन. हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों मॉलिक्यूल्स हैं. जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई. दोनों की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, इसका मतलब है कि दोनों ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, ज्यादा मूव कर रहे हैं. तो इसका मतलब है दे आर एबल टू बाउंस इनटू वन अनदर, दे आर एबल टू कोलाइड विद वन अनदर. एंड बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, हम क्या ज्यादा फॉर्म कर रहे हैं? देयर इज एन इंक्रीज in the formation of enzyme substrate complexes. I'll write it in a short form that the enzyme substrate complexes are formed more frequently and therefore the rate of reaction increases until Vmax is achieved. So this is how you have described the first half of the graph. कि हमारे पास हमारा जो ग्राफ है वो टेम्परेचर के इंक्रीज की वजह से उसमें एक रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज क्यों आ रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज क्या, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो रही है. फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ज्यादा जल्दी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ और ज्यादा से ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है या आपकी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो रही है. अंटिल वी मैक्स, योर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज अचीव्ड. Now, with the second part, how would you describe the second part of this graph? What is happening in the second part? Why is there a decline post the optimum temperature? Why can you see a decline post optimum temperature? हमारे पास टेम्परेचर अभी भी इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, तो अब हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ क्यों नहीं बन रहा है? या अगर बन रहे हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्यों डिक्लाइन हो रहा है? Any suggestions? Any reasons? Okay, so you're saying that the shape of enzyme and its active site changes. Now, this is one part of your statement, and that is correct. आप denaturation basically explain कर रहे हो. You have to tell why is that shape of enzyme and its active site changing. What हमारे पास पहले क्यों ये चेंज नहीं आ रहा था? पहले भी तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, तो उस टाइम पर टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हमारी एक्टिव साइट का या हमारी एंजाइम का जो शेप है वो क्यों चेंज नहीं हो रहा था पहले? What is different or what is happening now which was not happening before? So basically, आपका जो reason है that shape of enzyme and active site is changing, that's absolutely correct, but you have to explain it. So what happens is that we understood कि हमारे पास जो सारी enzymes होती हैं उनके पास active site होती है, and active site is the main reason why we're having this catalysis basically. क्योंकि एक्टिव साइट से आकर हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बॉन्ड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, और जब ये कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उसके बाद हमारे पास क्या होता है? हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं और हमारा रिएक्शन होता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट our active site is because of what? Or our 3D structure of an enzyme is because of what? It's because of the third degree or third level of protein folding. And we discussed it in our very first class of enzymes that all enzymes have a tertiary structure. Why? Because tertiary structure is that level of protein folding where we get a 3D structure of our protein molecule. Okay, so our 3D structure is because of what? Our third level of protein folding, and that is what is giving our active site its 3D shape and enabling it to be able enough to bond to substrate molecules.
नाउ ऑब्वियसली हमारे पास वो 3D स्ट्रक्चर क्यों बन रहा था, वो रेगुलर फोल्डिंग इनटू अ 3D स्ट्रक्चर क्यों हो रही थी प्रोटीन की, वो हमारे 4 बॉन्ड्स की वजह से हो रही थी। कौन से 4 बॉन्ड्स? हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, our hydrophobic bonds, sorry, hydrophobic interactions, ionic bonds, and disulfide bonds. These bonds are basically what are providing your enzyme its 3D structure, and that 3D structure is responsible for the shape of the enzyme molecule, for the shape of your active site. Now what happens is कि हम जब अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर से एक्सीड कर देते हैं अपने टेम्परेचर को, तो जो ये बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, ये बॉन्ड्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर्स, एट टेम्परेचर्स हायर देन द ऑप्टिमम टेम्परेचर्स। और जब ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे या ये बॉन्ड्स डिसरप्ट हो जाएंगे, तो होगा क्या? होगा ये that these were the bonds which were basically holding the enzyme or the active site in its shape. These bonds were giving the active site its shape, right? तो अगर यही बॉन्ड्स हमारे ब्रेक हो जाएंगे, यही बॉन्ड्स हमारे डिसरप्ट हो जाएंगे, या यही बॉन्ड्स हमारे टैम्पर हो जाएंगे, तो इन बॉन्ड्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारा जो एक्टिव साइट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्ट्रप्ट हो जाएगा। सो अगर मेरी एक्टिव साइट ऐसी थी तो वो शायद ऐसी हो जाएगी, राइट? माई सबस्ट्रेट वॉज एबल टू फिट इन टू दिस नॉर्मल टाइप ऑफ एन एक्टिव साइट, वो इस एक्टिव साइट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं। तो इनिशियली क्या होगा हमारे पास, अब इफ यू लुक एट दिस, हमारा रिएक्शन 40 हमारा यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, राइट? अब हम जब 45 पे गए तब हमारा बिल्कुल जीरो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो रहा, हम 50 पर गए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जीरो नहीं हो रहा, इवन 60 पर भी रेट ऑफ रिएक्शन जीरो नहीं हो रहा, 60 से थोड़ा सा आगे जाकर 61 या 62 पे हमारा बिल्कुल जीरो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट पर हमारी कोई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, किसी भी किस्म का रिएक्शन 61 या 62 टेम्परेचर पर आकर स्टॉप हो रहा है, हॉल्ट हो रहा है। इनिशियली फॉरन ही मैंने 40 से 41 किया, तो मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा रिएक्शन होना बंद हो गया। व्हाट हैपेंस इज कि जो शेप का चेंज होता है वो स्लोली, हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, स्लोली हमारी एक्टिव साइट अपना टेम्परेचर लूज करना शुरू करती है। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पास शेप में चेंज आता है, तो ऐसा नहीं है कि फॉरन से जैसे हल्का सा चेंज आया तो हमारा सबस्ट्रेट बॉन्ड नहीं कर सका। इफ यू रिमेम्बर, हमने फ्राइडे वाली क्लास में एक मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम पढ़ा था विच वाज योर इंड्यूस्ड फिट मॉडल। हमारे पास जो लॉक-इन की हाइपोथेसिस है वो पहले आया था, वो 1800s में आया था शायद, और हमारे पास जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट केम इन 1949। ओके, सो आवर इंड्यूस्ड फिट मॉडल सेड कि हमारे पास जो एक्टिव साइट है वो थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड कर सकती है अराउंड इट्स सबस्ट्रेट, राइट? सो हमारा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो सेम डिट्टो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए हमारा एक्टिव साइट और हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को। थोड़ी बहुत अगर शेप में डिफरेंसेस हैं तो वो डिफरेंसेस ज्यादा मायने नहीं रखते, हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर भी बन सकता है। तो हमारे एक्टिव साइट आहिस्ता आहिस्ता अपनी शेप लूज करता है, क्यों? क्योंकि जो ये 4 बॉन्ड्स हैं जो इस एक्टिव साइट को शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एट हायर टेम्परेचर्स बियॉन्ड योर ऑप्टिमम टेम्परेचर दे स्टार्ट दोज बॉन्ड्स स्टार्ट टू ब्रेक। तो वो ब्रेक होना शुरू होता है, वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू होते हैं, तो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस की जो फॉर्मेशन है वो कम से कम होती जा रही होती है। सो 40 पर अगर सबसे ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे, तो उस टेम्परेचर के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस। व्हाई? बिकॉज सबस्ट्रेट परफेक्टली फिट नहीं हो पा रहा होगा एक्टिव साइट में, जिसकी वजह से हम एक रिडक्शन देख रहे होते हैं। और फॉरेन से ये नहीं होता कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना पा रहे, आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे पास बिल्कुल जीरो पे जा रहा होता है टेम्परेचर, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। सो दैट इज इट। तो हम अपनी एक्सप्लेनेशन में क्या रखेंगे? हम अपनी एक्सप्लेनेशन में बेसिकली ये लिखेंगे दैट at temperatures at temperature beyond the optimum temperature, the enzyme or the active site begins to lose its
3D, or you can say tertiary structure, due to the hydrogen bonds, hydrophobic interactions, and ionic bonds breakdown. Now, your question can arise that why did I only mention three bonds? I only am saying that the hydrogen bonds, the hydrophobic interactions, and the ionic bonds. These three bonds are going or are facing a breakdown because of an increase in the temperature beyond optimum temperature. That is because our disulfide bond, हमने पढ़ा था disulfide bond हमेशा दो cysteine amino acids के बीच में बनता है और उसमें हमारे पास बेसिकली जो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिमूव हो रहे होते हैं और दो सल्फर्स आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं दो डिफरेंट सिस्टीन अमीनो एसिड्स को. Now the thing is that the disulfide linkage is a very strong linkage. It is a very strong bond. तो वो इतना easily टूटता नहीं है. It is a very strong bond और वो इतना easily टूटता नहीं है. तो कभी भी जब आप denaturation की बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? आपकी denaturation हो रही है. डिनेचरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का एक नेचर है. एंजाइम का क्या नेचर था? उसका 3D स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसकी स्पेसिफिक शेप, उसका एक नेचर थी. वो अपने नेचर से उसमें एक चेंज आ रहा है, वो डिनेचर हो रही है, डिनेचरेशन हो रही है. It's losing its shape, right? And why is it losing its shape? It is losing its shape because these three bonds, your hydrogen bonds, your hydrophobic interactions, and your ionic bonds are becoming weaker. They're breaking down, they're rupturing, they're getting disrupted. आपके ये तीन बॉन्ड्स हमेशा डिनेचरेशन में टूट रहे होंगे, डिस्टरप्ट हो रहे होंगे. आपका कभी भी आप अपनी एक्सप्लेनेशन में ये नहीं कहोगे कि जो डाइसल्फाइड लिंकेज है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, वो टूट रहा है. व्हाई? बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वो अमूमन इतनी आसानी से नहीं टूटता है. ओके, सो योर denaturation is because these three bonds are losing their bonding. So because there is a change in the active side, because the bonds are breaking, the enzyme loses the specific shape of the active side, reducing the formation of enzyme substrate complexes and therefore the rate of reaction decreases. So that's how temperature is affecting your rate of reaction of an enzyme.